गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन नर्सिंग ऑफिसर। जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब करदे एवं वीडियो टी को लाइक शेयर करदे आउ बेल आइकन उपर प्रेस करदे ताकि नुआ वीडियो अपलोड हेले नोटिफिकेशन आपण मान पाखु फर्स्ट पहुँची जिवो। तो वीडियो टी को स्टार्ट करिवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमोरेज इज। क्वेश्चन टी, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमोरेज इज। ऑप्शन गुड़ी कहला यूटेराइन एटोनी, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, सर्वाइकल टीयर, DIC। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द एवरेज वेट ऑफ ए टर्न प्लासेंटा इज। क्वेश्चन टी हैला द एवरेज वेट ऑफ ए टर्न प्लासेंटा इज। ऑप्शन गुड़ी कहला 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 900 ग्राम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 500 ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन इज। ऑप्शन गुड़ी कहला कंप्लीट ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज, फुटलिंग ब्रिज, नेलिंग ब्रिज। The correct answer is option B, frank bridge. Then next question देखिबा, the best indicator of ovulation is। question टी हैला the best indicator of ovulation is। ऑप्शन गुड़ी कहला basal body temperature rise, menstrual bleeding, cervical cancer screening, serum HCG। correct answer is option A, basal body temperature rise। Then next question, the hormone detected in pregnancy test is। option गुड़ी कहला estrogen, progesterone, HCG, FSH। correct answer is option C, HCG। Then next question, normal pH of vagina is। ऑप्शन गुड़ी कहला 2.5 to 3.5, 3.8 to 4.5, 5.5 to 6.5, 7 to 8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3.8 to 4.5। Then next question, most common organism causing PID is। E. coli, Chlamydia trachomatis, Candida, HPP। correct answer is option B, Chlamydia trachomatis। The next question देखिबा, the most common benign tumor of uterus is। question टी, the most common benign tumor of uterus is। ऑप्शन गुड़ी कहला adenomyosis, leiomyoma, sarcoma, endometrioma। correct answer is option B, leiomyoma। Then next question, clomiphene citrate is used for। question टी, clomiphene citrate is used for। ऑप्शन गुड़ी कहला contraception, ovulation induction, treatment of fibroid, abortion। correct answer is option B, ovulation induction। Then next question, the most common cause of male infertility is। question टी, the most common cause of male infertility is। ऑप्शन गुड़ी कहला varicocele, azoospermia, low sperm count, erectile dysfunction। correct answer is option C, low sperm count। Then next question, the commonest site of endometriosis is। question टी, the commonest site of endometriosis। ऑप्शन गुड़ी कहला ओभारी, cervix, vagina, fallopian tube। correct answer is option A, ovary। Then next question, the most common gynecological malignancy worldwide is। question टी,
The most common gynecological malignancy worldwide is ऑप्शन गुड़िक है ओभारियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, vulval cancer. Correct answer is option B, cervical cancer. Then next question, HPV types commonly associated with cervical cancer are. Question T, HPV types commonly associated with cervical cancer are. Option गुड़िक है 6 and 11, 16 and 18, 1 and 2, 40 and 41. Correct answer is option B, 16 and 18. Next question देखिबा, the most common cause of menorrhagia in reproductive age is. ऑप्शन गुड़िक है फाइब्रॉइड यूटेरस, सर्वाइकल कैंसर, प्रेगनेंसी, ओवारियन सिस्ट. Correct answer is option A, fibroid uterus. Then next question, the first line investigation for abnormal uterine bleeding is. Question T, the first line investigation for abnormal uterine bleeding is. Option गुड़िक है MRI, pelvic ultrasound, CT scan, laparoscopy. Correct answer is option B, pelvic ultrasound. Then next question, the most common type of ovarian cancer is. ऑप्शन गुड़िक है जर्म सेल ट्यूमर, एपिथेलियल ट्यूमर, स्ट्रोमल ट्यूमर, मेटास्टैटिक ट्यूमर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एपिथेलियल ट्यूमर. The next question, tumor marker for epithelial ovarian cancer is. Question T, tumor marker for epithelial ovarian cancer. ऑप्शन गुड़िक है AFP, CA125, HCG, LDH. Correct answer is option B, CA125. Then next question, the most common symptom of menopause is. Question D, the most common symptom of menopause is. ऑप्शन गुड़िक है hot flashes, weight loss, amenorrhea only, infertility. Correct answer is option A, hot flashes. The next question देखिए, the first sign of puberty in female is. ऑप्शन गुड़िक है menarche, breast development, pubic hair growth, ovulation. Correct answer is option B, breast development. Then next question, the most common cause of hirsutism is. ऑप्शन गुड़िक है PCOS, Turner syndrome, menopause, hypothyroidism. Correct answer is option A, PCOS. Then next question, the fetal lie refers to. ऑप्शन गुड़िक है position of fetal head, relationship between fetal and maternal long axis, degree of flexion, placental location. Correct answer is option B, relationship between fetal and maternal long axis. Next question, engagement of fetal head means. ऑप्शन गुड़िक है maximum diameter passes through pelvic inlet, baby is delivered, cervix is dilated, placenta separates. Correct answer is option A, maximum diameter passes through pelvic inlet. The next question, the most common fetal position is. ऑप्शन गुड़िक है left occipito anterior, right occipito posterior, bridge transverse. Correct answer is option A, left occipito anterior. Then next question, Apgar score is assessed at. ऑप्शन गुड़िक है birth and 5 minutes, 10 and 20 minutes, 1 first hour only before
birth. Correct answer is option A, birth and 5 minutes. Then last question देखिए. The most common cause of neonatal respiratory distress is. Question T. The most common cause of neonatal respiratory distress is. Option गुड़िक है meconium aspiration, respiratory distress syndrome, pneumonia, congenital heart disease. Correct answer is option B, respiratory distress syndrome.